WSC बातें में मैं प्रीति ठक्कर आप सबका स्वागत करती हूं और आज हम लोग बात कर रहे हैं रेनू दलाल यानी कि तरला दलाल की डॉटर से। तो आइए रूबरू होते हैं रेनू दलाल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हमारे अचीवमेंट्स के लिए मैं आपसे बात करती हूँ और इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द चैनल। शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। कॉर्पोरेट, जैसे आई नो द स्टोरी बिहाइंड द लेडी कि आपने बहुत सारे नंबर्स और एक्सेल शीट के साथ काम किया और फिर एट द लेटर स्टेज यू डिसाइडेड टू कम इन द फील्ड ऑफ culinary. तो हाउ डिड दैट डिसीजन हैपन एक्चुअली? तो मैं आपसे उसके लिए मैं आपके बचपन से लेती हूँ, जब मेरी माँ कुकिंग क्लासेस चला रही थी और वो इतनी मशहूर बनी थी उसके कुकिंग क्लास और बुक्स के साथ। सो मैं हम छोटे छोटे बच्चे थे जब मम्मी के क्लासेस चल रहे थे, उसकी शूट्स चल रही थी बुक्स के लिए। तो अच्छा खाना हमारा घर में हो रहा था एवरी डे, नॉट गुड, बहुत अच्छा खाना। तो हमारा वो पिताजी थे नलिन दलाल, उसने एक नोटबुक लिखा, तो जो भी आ रहे थे क्या खा रहे थे वो सब उसने नोटबुक में लिखा था। ओके, तो उसके लिए आप हमारे फ्रेंड्स हो, आप रिलेटिव हो, आप रिश्तेदार हो, हमारा मेन्यू कभी ऑलवेज नया था। तो आप आते थे, वो क्या बना रही है नीचे, मम्मी क्या बना रही है। तो मेरे पिताजी ने सब, तो समटाइम्स मम्मी बोला ये मैं मेन्यू में बनाती, पिताजी वो चेक करते थे बुक में, नहीं तुमने ये बनाया था लास्ट टाइम, कुछ अलग बनाओ। तो वो हम बचपन से सीखे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे घर में जो खाना था वो मशहूर था और हमको कैसे एंटरटेन करने के सब लोग आते थे, कैसे बनाने थे, सो हम लोग ने सब सिखाया है। तो मेरी मम्मी बनाती थी, मैं मम्मी से ऑलवेज जब मैं एंटरटेन कर रही थी और किसी मम्मी से ही पूछती थी मम्मी अभी क्या नहीं बनाओ, तो ऑलवेज मम्मी बोलती ये नया मेरा डिश है, ये नया डिश है, ये बना दीजिए। तो मैं ये करती थी और हमेशा हम लोग वो जो थे, हम फ्रेंड्स लोग को वो बुलाते थे, फ्रेंड्स रिश्तेदार को। इट इज़ अ ट्रेडिशन इन द हाउस टू ऑलवेज हैव पीपल ओवर फॉर मील्स एंड टू एंटरटेन विद लव एंड अफेक्शंस, जो मम्मी ने हमको सिखाया था। तो मेरी माँ 2013 नवंबर में एक्सपायर किया था, 6 नवंबर। सो आई थिंक इट टुक मी, हम वेरी क्लोज थी मेरी माँ से, तो सम टाइम इट टुक मी टू इवन कम आउट ऑफ दिस, यू नो दैट मेरी माँ नहीं है। लेकिन मेरी माँ को मैंने, आई फाउंड हर इन द किचन फाइनली। शी वाज नॉट देयर इन द वर्ल्ड बट शी वाज इन द किचन। यू नो, गिव यू अ पॉज कि आपके मतलब आपने बोला तरला जी, आई थिंक शी इज अलाइव इन ईच एंड एवरी किचन even right now. Yes, exactly. So जब मैं बाहर जाती तो मुझे कुछ नया बनाने का था, तो मैं अभी मम्मी नहीं थी, मम्मी को डायल ऑप्शन नहीं था, मम्मी मैं क्या बनाऊं, नहीं मम्मी मैं क्या करूं नया, तो वो ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए मैं अपने आप रेसिपी स्प्रेडशीट पे लिखने लगी थी और नया नया रेसिपीज बनाने लगी थी और मैं ट्राई करती थी और बोल ओके, इनिशियली मैं थॉट ओ बिगिनर्स लक, यू नो आई एम डूइंग सो वेल इन माय न्यू रेसिपी। लेकिन फिर बहुत रेसिपीज हो गए थे और सब लोग, हम लोग बुला रहे थे, सब लोग घर पे बहुत अप्रिशिएट करते, लेकिन तो ये नया रेनू, कैसे नया रेनू आ गई, इतनी अच्छी कुकिंग कर रही है। तो ऐसे मेरे जर्नी शुरू हुआ। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, जो सिखाया है सब कैसे बनाने। इट इज़ नॉट दैट द सो मेनी इयर्स गए हैं, लेकिन द कनेक्शन इज इमीडिएट। Yes, yes. Actually, I've seen her cook, so it is not difficult for me to connect. And when I go in the kitchen, I feel she's there. वो थे मेरी किचन में। It's not easy to make a new dish, to come with something creative. It is there in the DNA. Finally, it is there. So she is there. Yeah. So this whole transition has come after her going away. So, maybe then you realize that now you need to cover up the space she has, left behind. तो शायद आप वहाँ पर से आपका टैलेंट has started showing off more to people because till then you were busy with your career, your corporate career. तो आप लेकिन मेरे भाइयों को पूछो, like he's my brothers always say, वो बोलते थे you used to cook well when you were young. I had it. It's just that I pushed it aside. And my mother was there in front. There she maybe was you had a good cook already in the house, so you never had a chance to go in the kitchen. वो आप जो भी बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी माँ थी, मेरी माँ वो सब बना रही थी मुझे। लेकिन जब वो नहीं थी तो इससे मैंने शुरू किया, मेरे ये दूसरा करियर शुरू किया। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग नाउ बिकॉज अभी 3 बुक्स लिखी हुई है, वेबसाइट में इतने रेसिपीज है एंड मेरे रेसिपीज बना रहे हैं सब लोग इंडिया में, विदेश में, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक से मिल रहा है। उससे
मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अंदर से। तो मैं क्या अभी कर रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ सब लोग को। सी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन यू मेक अ करियर चेंज ऑल्सो, व्हेन यू ब्रिंग समथिंग न्यू आपकी जिंदगी में, तो आपको बदलना चाहिए अंदर से। अब जब भी मैं लिख के आइदर मैं इस बुक में लिखती हूँ रेसिपी या वेबसाइट में लिखती हूँ, किधर में मैं आपसे कम्युनिकेट, आई हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, इट हैज टू बी एबल टू कम अक्रॉस, okay, that I'm able to write and I'm able to communicate with people. So it's brought out a huge change in me personally also. मेरे अंदर से मेरे बहुत change आ गया. We change so much as human beings. So this whole transition from corporate to this, and it's now like this is for me. I love it. I love it so much. जो मैं कर रही हूँ मुझे इतना satisfaction मिल रहा है. I cannot tell you how much satisfaction it gives me. And I love to teach. Yeah, amazing. Here एक थोड़ा सा off-beat मैं question पूछ रही हूँ. Sure. But I think that is something viewers also, everybody must be wanting to know. फिर ज़्यादातर क्या होता है जब मतलब your mom was an excellent cook. Yeah. So instead of you taking up her career, your brother was taking Right. care of her Yeah, website, right. and you were doing something else in the Right. world of corporate, right? Yes. So there was not there some peer pressure where you always were told that आप भी मम्मा वाला career ले सकते थे very easily, you could have हाँ, तो gone जब there. मैं छोटी थी तो of course everybody used to get fired outside. फायरिंग मिलता था मम्मी के फ्रेंड से, तो क्या कर रही है, तो टाइम वेस्ट कर रही है, तो कुकिंग में ही जाना। सब लोग मुझे बोल रही थी, तो व्हाई यू नॉट कुकिंग, व्हाई यू नॉट डूइंग इट, एंड वो टाइम मेरे आंसर ही नहीं था। मैं स्माइल करती थी ऐसे, ओके आई एम डूइंग कॉर्पोरेट करियर, मम्मी है, मम्मी कर रही है, मैं क्यों करूँ, मींस। So I was a lot of pressure when I was younger, but now when the transition has happened, like, you know, wow, you know, that everybody's saying now, wow, it's there, you know, so they follow my recipes, you know, so it's a big transition in a human being also. And after this movie Tarla, Yes. there was lot of, you know, there were the few things that came to people's knowledge which were, you know, always तरला जी को सबने जैसे एक लेजेंड, कुकिंग लेजेंड, वेजिटेरियन एंड कुकिंग लेजेंड के तौर पे देखा. देन आफ्टर सीइंग द मूवी पीपल रियलाइज देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स आल्सो देयर, यू नो, in the journey. Lot of hard work is always there in the journey. So how do you, what was the impact of her movie release on you particularly? So of course I think the movie Tarla has, you know, I mean, got Tarla Dalal back to today's younger generation. So maybe the older generation all knows, सबको मालूम है कि Tarla Dalal कौन है. अभी younger generation is come back to her and it's got the original master chef back. So of course she's been in focus and all the children come in focus also. So I think whenever मैं biopic देखती हूँ, मैं always Google करती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अभी कर रहे हैं. So yes, I've been like getting, of course I've had so many more interviews than normal. I've had people coming to me, you know. So I think the spotlight has come back, like, because I am cooking now, no? The spotlight and the questions have also come back to me. So yes, things have changed definitely after the movie. But I think the main message of this movie is, I think what they wanted to come across, जो आप सब लोग बता रहे थे Tarla, it's an inspirational story on her life. So the two ordinary people, like you see my father and my mother. So at that, आप वही इंडिया में देखो जब obviously before जो औरतों को didn't work or they didn't have careers at that time. How my father not even encouraged her, he was her backbone. So basically everybody says Nalin made Tarla. Yes, you know, he was there because without his support, frankly speaking, she definitely would not have been able this to come the levels she achieved, I think initially, I think because we were all young when she was achieving these levels. So it was so, and basically sab log ko, I think in everybody, for hard work, when you succeed there is always a lot of hard work and it's obstacles. Nobody goes straight to number one in one day. I don't think abhi aap dekho sabko, आप कोई भी स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर या कोई भी, सब लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है. ऐसा नहीं स्ट्रेट नंबर वन पे जाते हैं, वो तो है ही नहीं. Would like to know some incident about your childhood, your brothers, and you had some experience जो आप audience के funny भी हो सकता है, कुछ मतलब कोई जर्नी का ऐसा स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट जो मिस आउट हो गया है ऑडियंस को. नहीं, ऑडियंस जो मम्मी जब क्लासेस कर रही थी ना, शी वाज ऑलवेज लाइक बहुत हाइपर थी, तो हम लोग उसको बुलाते थे टेंशन पैक तरला दलाल. टेंशन पैक, TPTD. TPTD was the word her you pet used. name. Yeah. And the whole house had to run after her. So, you know, we'd all help in the classes, maybe moving. There's a nominal help of moving the chairs or whatever, the kitchen, but it was like a full coordinated effort, you know. So I think it was like,
I think even whenever she had shows, when she had this, she'd always some level of excitement in her, you know. And she would love her teaching, you know. So we used to always call her, वो tension packed है, तो आप audience को भी बता सकते हैं, you know. That was a joke in house. So TPTT, how are you doing? Oh wow! So that was a pet name in the house. Yeah, the class on, we used to call her TPTD, means tension packed Tarla Dalal, because she used to be. I mean, there were 4 classes that week, like it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So they were going one after the other. So when you were having this particularly, you decided to start this as your career. Right. What was your family's, reaction to it? Because that was always very. It's always very. I would rather say. See, family reacts very differently when you decide to change your career at some later stage of your age. So how did your family react to your deciding to move from corporate to culinary? I think positive to tha. My husband always used to think I used to make fabulous food, mere pati, and even my mama, my mother's brother, Rajnikant Shah, and the whole family were very thrilled that I've started cooking and coming across with this. Yes, and my brothers also. I think finally it took a long time because for people to understand the shift. How has cooking become so much a part of her life now? So I think it takes time for people to accept it when there is a shift. But yes, I think people are very happy because I am very happy. There is currently, Renu, here I would just like to know that people have lot of globalization these days in the cuisine as well, right? So traditional and globalization of recipes, where do you put yourself in that segment, and how do you see the future of recipes? I think, recipes, I think हम लोग जो भी कर रहे हैं, everything is always fluid and fast evolving, you know, whatever is trending today. So I think fusion food is trending a lot. Like East, West, whether it's Mexican, Indian, or, you know, whatever a mix of cuisines is very trending. Presentation of food has come to the forefront now. जो ingredients है, वो सब नए ingredients जो आ रहे हैं market में, तो इसमें से बहुत नए recipes भी बनते हैं. तो I feel traditional recipes, classics तो classics ही रहेंगे. लेकिन सबको अभी आप जाते हैं घर पे भी, the family wants अभी क्या, what is new on the table? रोटली दाल शाक क्रंचा दिवस पची, then what is new on the table? How do you feel that this you already have a big label, right? Dalal is a family of, in food industry is a big name. Yes. So how do you place yourself in that, and where do you see the future of it? Well, I would say that, you know, I place myself as I'm learning and I'm coming across with new recipes and coming across, I've placed myself as the current trending recipes and what is trending. And I also see the future of food industry is huge, because as you say, a lot of people order from outside. Catering is also very common, plus a lot of people want to make it home. So I feel like now I've made my label, which still has to reach where my mother is, but my label, my own brand name is slowly evolving with the type of recipes I make. So as I say, I'm in the beginning stage, but I'm evolving, and I think people are appreciating because I write very simply. I make the food look good, taste good, and make very simple recipes. So the whole simplification of food. So जो मेरा criticism है, सबसे criticism है आपका recipes बहुत simple है. Even Purnima was telling me recipe simple है, but do you want a complicated recipe? No, na. Nobody does. When they have a full family, careers, every woman is having a career, children, family, सास है, रिश्तेदार है, तो they want something new and different on the table. जो मैं मेरे books और recipes से आता है, और traditional recipes भी है. I think there's a place for everybody under the sun. Yeah, so well said. Just while closing, would you like to give a note to our Women Social Corner ladies, and of course something about your books? Yeah, so for Women Social Corner, really, for the ladies that I've written 3 books. Modern vegetarian recipes, simple and delicious vegetarian recipes, and recipes from my heart. This is the 3rd book which I've written. So this is all are vegetarian and eggless recipes. Plus I have a website, renudalal.com, which you can go and check, and they have amazing recipes. I have a YouTube channel. I've got social media, Instagram, Facebook, all social media I am represented there. So as I say, smile, do something different, make it different for your family. Don't try and make something different. Believe me, when you make something new for your family, it is appreciated by your family and your friends. So do make the difference when you cook at home, and add a tablespoon of love to your food and see the difference. Renu, it was amazing having you on the forum. I am so much thankful for the insight you have given us,
एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। ऐसी ही और बढ़िया सी जानकारी के लिए बने रहिए WSC बातें में। मैं प्रीति ठक्कर आप सबसे विदा लेती हूँ, दोबारा मिले तब तक के लिए थैंक यू।